Okay, so let me repeat it again. Like आज का टॉपिक है loops and what are loops? Loops are actually the repeating statements and these are also known as integrating statements. These are the two different name for the loops. अब loops का मतलब ही like repeating statement. इससे हमको क्या पता चलता है? Like clearly हमको पता ही चल जाता है कि जब हमको एक चीज बार बार करनी है, लाइक रिपीट करना है, हमको रिपीटिंग के अंदर से रिपीट करना है, तो हम लूप्स का यूज करेंगे. वी विल बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप्स. इफ yeah, it is just another name of loop. It is not just like it is something completely different. It is just another name of loop. So intriguing statements are just repeating statements. It is just a word that is being used for the loops. Sorry, Kshitij, actually. No worries. Like they were already familiar with if-else thing as it was covered, so they asked to continue with loops. That's why I continued with it. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है. ओके, सो अब लूप्स होते हैं ना, हमारे मल्टीपल टाइप के लूप्स होते हैं. जैसे हमारा एक हो गया व्हाइल लूप, एक हो गया हमारा फॉर लूप, एक हो गया हमारा डू व्हाइल लूप, और एक एक और भी लूप होता है जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लाइक फॉर ईच लूप. ये चार हम मतलब ये these three are like more commonly used, but for each loop is also another loop which is present. और ये भी बहुत जगह पे यूज होता है. you will see it like कि ये कैसे चल रहा है. ठीक है, तो let us continue with like while loop. और जितने भी लूप होते हैं ना हमारे, इनका मेन काम एक ही होता है, like to iterate over a particular block of statements. But like the main purpose of loop is to iterate over block of statements. So this is the main purpose of loop. अब इसके अंदर हम देखते हैं लाइक सिंटैक्स भी देख लेते हैं थोड़ा सा. व्हाट इज एक्चुअली द सिंटैक्स ऑफ द लूप और वो किस तरह से काम कर रहा है. लेट मी जस्ट क्लियर द कैनवस. तो अब हमारा एक व्हाइल लूप आया था. अब एक चीज हो रहा है कि व्हाइल लूप जितने भी हमारे लूप होते हैं, लाइक एक व्हाइल की बात नहीं करते, किसी भी लूप की बात करते हैं. सो हम लूप्स तभी यूज कर सकते हैं व्हेन वी हैव अ गुड नॉलेज ऑफ कंडीशनल्स. क्योंकि हमको लूप खत्म करना होता है. एक लूप होता है वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, हमको उसको किसी पॉइंट पे रोकना भी है. तो हमको उनको रोकने के लिए कंडीशनल्स की जरूरत होती है. लाइक कंडीशनल ही तो हमारे डिफरेंट फ्लोज बनाती हैं स्टेटमेंट की. जैसे कल बताया था, देयर आर डिफरेंट फ्लोज ऑफ प्रोग्राम, सो वी यूज द कंडीशनल्स. okay, so just like that we are using loops, and to set different flow of the loop we are using conditionals. तो अब इस लूप के अंदर हमारा while लिखते हैं हम, और इसके अंदर हमें कंडीशन लिखते हैं. दैट इज अ कंडीशन और लाइक टर्मिनेशन. और इसको कंडीशन फॉर कंटिन्यूएशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही काम करती है, या तो टर्मिनेट करवाएगी या कंटिन्यू करवाएगी. अब ये जो हमारे ब्रैकेट्स आ गए, यहाँ पे से हमारे लूप का स्कोप शुरू हो चुका है. अब इसके अंदर हम कोई भी अपनी स्टेटमेंट लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब मेरा ये चीज हो गई. अब इसको थोड़ा प्रोग्रामेटिकली देखते हैं साथ साथ कि इसको ये हमारी फाइल तो हमने लगा दिया. अब इसको प्रोग्रामेटिकली भी कैसे कर सकते हैं, एक बार थोड़ा लेट अस आल्सो लुक अबाउट दैट. एक नई फाइल बना लेते हैं, इसको loops.cpp. And guys, after I think few of the concepts of Kshitij बता देगा, तो then we'll share you some questions, है ना. We will divide you in few groups. ठीक है, चार जनों के ग्रुप्स में you need to solve these questions, है ना. And it will be great fun. It's a fun activity जो लास्ट में करेंगे, सबसे लास्ट में. तो stay till the end, है ना. और वहीं पे क्वेश्चन शेयर करेंगे आपको 2 से 3. मज़ा आएगा आपको करने में. ठीक है, एंड हाथ वाथ आंसर बता देंगे आफ्टर डूइंग दैट क्वेश्चंस. तो यस, अभी ना लाइक कि क्या करना है हमको ना, एक शॉपकीपर के लिए एक एप्लीकेशन बनाना है. उसके अंदर शॉपकीपर के लिए एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, वो पहले अमाउंट एंटर करेगा जिस पे उसने प्रोडक्ट को बेचा है,
उसके बाद वो अमाउंट एंटर करेगा जिस पे उसने प्रोडक्ट को खरीदा था। और अब उसको ये चीज इंश्योर करनी है कि जब भी उसने प्रोडक्ट को बेचा तो वो किसी एक ज्यादा अमाउंट पे बेचा, उसको किसी कम अमाउंट पे ना बेचा हो, ताकि उसका प्रॉफिट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, हैशटैग इंक्लूड योर स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std main and like return 0 एंड लाइक आई एम जस्ट क्रिएटिंग समथिंग। मैं यूजर से पूछता हूँ, मैंने दो वेरिएबल इनिशियलाइज किए लाइक इंट कॉस्ट एंड सेल। उसने किस किस पे किया। अब इतना करने के बाद अब इसने क्या किया, अपने आप इनपुट किया। एक इसने किया सी इन कॉस्ट एंड दोबारा से इनपुट किया सेल। और अब इसने क्या करवा दिया, सी आउट करवा दिया। क्या करवा दिया इसने, सी आउट। चलो पहले एक बार चेक कर लेते हैं, वो देख लेते हैं। इफ क्या करेंगे हम, कॉस्ट इज लेस देन सेल, तो ये क्या कर दे, सी आउट प्रॉफिट इज, और इसने प्रॉफिट को लाइक प्रिंट करवा दिया। प्रॉफिट क्या होगा हमारा, सेल माइनस कॉस्ट। एक हमने छोटा सा प्रोग्राम बनाया जो बता रहा है अगर कॉस्ट इज लेस देन सेल तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है। अब अगर इसको हम रन करते हैं, लाइक कि इसने रन किया हमारा, हमने इनपुट दिया व्हाट इज द लाइक multiple definition of main, and what is the problem. सर आपने मेन में यूज नहीं किया है, आपने उसमें टेम्पररी वाले में यूज किया सर, इसलिए कोड रन नहीं कर रहा। क्या क्या क्या, सर जैसे आपने ऊपर मेन अरे डॉट, हाँ उसने उसको वो उठा लिया, एज ए डिफरेंट फाइल ट्रीट कर दिया। मैं समझ गया। नहीं वैसे अलग अलग फाइल में भी कर देता है, मेन डॉट cpp इज नॉट रिक्वायर्ड इन लोकल सिस्टम बट इट इज ऑटोमेटिकली इंटरनली लिंकिंग द फाइल्स, सो इट माइट बी हाँ। तो एक इनपुट करते हैं, लाइक उसने कॉस्ट पे खरीदा 15 रुपीज पे, उसने बेचा 25 रुपीज पे, तो इसका प्रॉफिट आया 10। एक तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसका प्रॉफिट आ गया 10। एक हैंडल भी कर सकते हैं टू डेकोरेट द आउटपुट। अब क्या करा, हमने देखा कि उसने खरीदा 25 पे बट उसने बेचा 15 पे। यूजर मतलब कस्टमर था हमारा, उसने गलत एंट्री कर दी, प्रोग्राम टर्मिनेट कर गया। बट अब हम ये नहीं चाहते कि वो प्रोग्राम टर्मिनेट करे। हम ये चाहते हैं जब तक वो करेक्ट इनपुट ना दे दे तब तक वो उससे पूछता रहे कि अच्छा तुमने यू हैव एंटर्ड रॉन्ग इनपुट सो यू हैव टू लाइक टाइप इट अगेन। तो हम क्या करेंगे, हमने इफ की जगह पे हम क्या कर देंगे, हम एक कंडीशन लगा देंगे। हमने यहाँ पे व्हाइल लगा दिया, व्हाइल। अब हमको कब तक चलानी है कोई चीज, हमको तब तक चलानी है जब तक हमारा प्रूफ लाइक कॉस्ट इज ग्रेटर देन सेल। अब इसको हम इसके अंदर नहीं करते, लाइक मैंने वाइल वन लिख देता हूँ। वाइल वन क्या होगा, एक ना इसको इनफाइनाइटली टाइम चला देगा। अब इसका क्या रीजन है वाइल वन का, उसको अभी हम डू वाइल के साथ देखते हैं, लाइक कि अभी डू वाइल का भी बताएंगे तो इसका बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। वाइल वन का मतलब ये चलता रहेगा। अब अगर इसका कॉस्ट इज लेस देन सेल है तो हम क्या करवा देंगे इसको प्रॉफिट, और यहीं पे हम क्या करवा देंगे इसको एग्जिट, या इसको हम यहीं पे करवा देंगे रिटर्न 0। तो ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं है तो ये प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, और इसको टर्मिनेट करने की जगह हम क्या करेंगे, हम वापस से उसको बोलेंगे कि आप कोस्ट और सेल को वापस एंटर करो। ठीक है। अब इसको देखते हैं हम चला के, लाइक कि हमने चलाया, हमने एक अमाउंट डाला, पहले हमने खरीदा 25 पे, फिर हमने बेचा 15 पे।
इसने दोबारा से इनपुट पूछ लिया, इसने कुछ करा ही नहीं। बट अगर मैं डालता हूँ कि ये उसने 15 पे लिया, 25 पे बेचा, तो इसने दिखा दिया प्रॉफिट इज डन और इसने प्रोग्राम को खत्म कर दिया। तो मतलब ये मेरा तब तक चलाता रहेगा जब तक एक मेरी कंडीशन वो नहीं हो जाती, फुलफिल नहीं हो जाती। अब इसके लिए हमने व्हाइल वन क्यों लिया? हम यहाँ पे भी एक कंडीशन दे सकते थे, वन का मतलब तो हमेशा ये चलता ही रहेगा। बट अगर मैं यहीं पे लिख देता हूँ व्हाइल कॉस्ट इज लेस देन सेल, ठीक है, अब मेरा कॉस्ट सेल से कम जब तक है तब तक ये चलाता रहेगा। तो अब मैंने अगर मान लो ये नहीं लगाया, ठीक है, तो अब इसने क्या किया, अब मैं इसको चला के देखता हूँ, रन करता हूँ। कॉस्ट मैंने डाला 15 और फिर मैंने डाला 25, इसने प्रिंट कर दिया प्रॉफिट इज डन, और ये फिर से मेरे से पूछता रहता है अगर मैं डालता हूँ 25 15, तो ये इसने मेरा एग्जिट कर दिया। बट अगर मैं इसको, ये बार बार इसको चलाता रहेगा जब तक मेरा वो कम होगा। जैसे मैंने 15 25 किया, फिर इसने किया 10 25, फिर इसने किया 18 30, फिर बार बार चलाता रहता है। बट आई वॉन्ट कि वो एक ही बार चले और एक बार होने के बाद वो उसको टर्मिनेट कर दे। तो अब इस व्हाइल लूप क्या करता है, पहले हमारी कंडीशन चेक करता है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इसके अंदर की स्टेटमेंट्स को चला देता है। इसने पहले ये कंडीशन चेक की, फिर ये स्टेटमेंट चला दी, इसने ये कंडीशन चेक की, फिर ये स्टेटमेंट चला दी, इसने कंडीशन चेक की, फिर ये स्टेटमेंट चला दी। बट अगर मेरी ये कंडीशन गलत आ जाती है, जैसे मान लो मैंने डाल दिया 30 एंड 12, तो ये कंडीशन जैसे ही गलत हुई तो ये इसको चलाएगा ही नहीं आगे, इसने प्रोग्राम को कर दिया एग्जिट। 30 एंड 12 से ये कंडीशन गलत होगी क्योंकि कॉस्ट इज 30 एंड सेल इज 12, तो ये कंडीशन गलत हो गई। तो जैसे ये गलत हुई उसने एग्जिट कर दिया। बट अब हम क्या चाह रहे हैं कि वो एग्जिट ऐसे ना करे, वो कम से कम प्रोग्राम को एक बार तो चलाए। लाइक वाइल पहले कंडीशन चेक कर रहा है फिर चला रहा है। बट अगर मैं इसी चीज को अगर मैं डू वाइल से करता हूँ, तो डू वाइल में क्या डिफरेंस आएगा, पहले मैं लगाऊंगा डू, के बाद मैं स्टेटमेंट्स लिखूंगा इसकी, लाइक सी आउट प्रॉफिट इज, और मैं यही चीज लिख देता हूँ सेल माइनस कॉस्ट एंडल, और मैं यहाँ पे एक वाइल लगाता हूँ अब मैं, और यहाँ पे मैं डालता हूँ लाइक वाइल कॉस्ट इज लेस देन सेल। तो अब इसमें क्या होगा, लाइक इसको हमने पहले को हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट क्या होता है कि वो वाली पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा जब जिस पार्ट को हम कमेंट कर देंगे। सो लेट अस रन दिस। तो इसमें क्या होगा, जैसे मैंने कॉस्ट डाला 10 एंड सेल डाला मैंने 25, ठीक है, कॉस्ट सेल से कम है तो ये चल जाएगा, ये बार बार चल रहा है। ओके, मैंने सीन तो बार बार लिया ही नहीं, लेट मी वेट एंड टेक सीन एज वेल, चलता ही जा रहा है। तो अब हमने क्या किया, 15 का खरीदा 25 का बेच दिया, फिर इसने दोबारा से पूछा 10 का खरीदा 25 का बेच दिया। बट अगर अब मैं गलत डालता हूँ, जैसे मैंने 25 का खरीदा 10 का बेच दिया, तो भी मेरा ये प्रोग्राम okay, it is asking for input after return. Okay, let me take it before and वो उस टाइम ही ले रहा था तो उसके बाद तो बंद कर ही देगा। एक 15 का खरीदा 25 का बेच दिया, what is it? 15 and 25. Okay, it is asking for input again 15 25. So the profit here is like 10. Then he purchased for 10 and sold it for 25. The profit is 15. Then he purchased for 25 and sold it for 10. The profit is -15. तो ये इस स्टेटमेंट को भी एक बार और चलाएगा जब ये भी होगी हमारी। सो डू वाइल लूप क्या करता है, ये मिनिमम वन सिंगल टाइम एग्जीक्यूशन तो करेगा ही करेगा। it will execute at least once and then further it will check the statement and check if the program can need to be executed further.
और डू वाइल लूप हमारा वैसे बहुत रेयरली यूज होता है व्हेन वी कम टू प्रोग्रामिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग वाइल लूप और फॉर लूप, यही दो लूप हम मेनली यूज करते हैं। And if there is any doubt regarding the while loop, or you can ask it. Like, no need to focus more about the do while loop. If you are comfortable with while loop, then we are ready to go. If you are comfortable, like, please type a yes there. Okay, okay. Are you all familiar with for loop? Like, can we skip for loop, or you want us to continue with, like, if anyone is not comfortable with for loop, I can explain that as well. But to save time, if you want me to skip the for loop, we can just skip the for loop and start with some of the programs. Okay, okay. I think Kshitij, don't escape any topic. Okay. No, if everyone is No, was no, no. familiar, then we can skip. But there are some of the students who are After this saying that. session, there are few students who are not attending the session. We need to give the recording, so it will create the problem. Okay. So, है ना? If they So, are, like, let us discuss the for loop as well. if they Here. are comfortable, don't go in deep. Okay. Just revise the topic Okay, thoroughly. okay. Let us just revise the topic. No, like, Jyoti, there are some of the situation that we need to do the work at least once, कि हमको एक बार तो काम करना ही है, उसके बाद हमको नहीं करना है, तो उसके लिए डू वाइल लूप केम इनटू कंसिडरेशन। जैसे कि मान लो आपके साथ एक कंडीशन लगा दी गई है कि आपको कम से कम एक को करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट लेना है, एंड फर्दर इट डिपेंड्स ऑन यू, आपके कॉलेज के अंदर, तो आपको एक बार तो वो काम मिनिमम करना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए डू व्हाइल लूप केम इनटू कंसिडरेशन, like the user has to do this task at least once, and then further it will depend on the condition whether he wants to do the work further or he want to skip it. Okay, you are other some people are asking to revise the looping thing, so let us revise the looping thing, and let us then work further. तो while loop की तो हमारे पास ये है while, condition for termination और statement। अब हमारा for loop होता है, it is also like somewhat similar to while loop। तो for loop में क्या होता है, हम थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। for loop में हम करते हैं पहले initialize, initialize, then semicolon, then condition, and then change. Like most of you know it by the name of increment decrement, but it is actually changed because we can divide here as well. We can perform any of the operation, and we write the statements here. और हिमाक्षी और एक दो लोग बोल रहे थे कि कैन वी रिवाइज लूप इफ पॉसिबल, लाइक, सो विच टॉपिक ऑफ लूप आर यू लाइक नॉट कंफर्टेबल विद, तो वाला टॉपिक के ऊपर दोबारा से रिवाइज करवा देंगे। इतने फॉर लूप तो मैं बता ही देता हूँ, इतने यू कैन लाइक जस्ट टाइप इट डाउन इन द चैट सेक्शन। ओके, फॉर लूप आई एम जस्ट रिवाइजिंग। सो फॉर लूप में क्या होता है, सबसे पहले हमको इनिशियलाइज करना होता है किसी चीज को, और फिर एक कंडीशन होती है, और फिर कुछ चेंज होता है। मेनली फॉर लूप हम यूज करते हैं for each loop. We will tell when there are some of the questions about it, so we will also tell for each loop. I am not skipping for each loop as of now. So अब इनिशियलाइज में हम मेनली फॉर लूप तब यूज करते हैं, while loop हम यूज करते हैं when we need to terminate on the basis of a condition, like
मेनली जो इसका पर्पस था फॉर क्रिएशन। एंड फॉर लूप हम यूज करते हैं व्हेन वी नीड टू आइटरेट ओवर समथिंग फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। आइटरेट ओवर फॉर सम स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, अब इसको आइटरेट ओवर फॉर स्पेसिफिक टाइम कैसे होता है हमारा, इस चीज को भी देख लेते हैं। लाइक कि ये चीज कैसे होती है। तो इस चीज को एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, लाइक एक प्रोग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे इसके अंदर तो हमने क्या कह दिया उसको कि जब तक हमारा कॉस्ट सेल से ग्रेटर नहीं आता, अब हम बोलते हैं कि उसको ये प्रोग्राम 5 बार चलाना है, उसको कम से कम 5 बार एग्जीक्यूशन करवाना है अपनी चीज का। तो हम क्या करेंगे, हमने किया एक फॉर लूप बनाया, और इसके अंदर सबसे पहली चीज क्या होती है, इनिशियलाइजेशन। लाइक इंट आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैंने 1 से इसको इनिशियलाइज कर दिया, और मेरे को इसको कितनी बार चलाना है, मेरे को 5 टाइम्स चलाना है। सो आई इज लेस देन इक्वल टू 5। लेस देन इक्वल टू 5 में क्या आएगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये लूप 5 टाइम्स चलेगा। एंड मेरे को हर टाइम क्या करना है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, या आई प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं, जो एक ऑपरेटर पहले से ही डिफाइंड होता है। तो अब इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले हमने इसको इनिशियलाइज किया। लाइक वी हैव इनिशियलाइज्ड इट फर्स्ट, then we have set some of the conditions, and then there is some of the change in the variable, like I is equal to I plus 1, so the value of I is changing. तो अभी इसके अंदर हमने ये चीज कर दी। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं एक बार, चलाते हैं। सी इन तो हमने करवा ही लिया था एक बारी, तो हम करवा देंगे सी आउट प्रॉफिट इज सेल माइनस कॉस्ट एंड हैंडल। एंड अब ये मेरे को 5 टाइम्स करवाना है, एंड आई हैव टू आस्क फॉर द इनपुट अगेन, सी इन कॉस्ट एंड देन सेल। तो अब मेरा ये लूप सिर्फ 5 ही टाइम्स चलेगा। जैसे मैंने एंटर करवाया 10 एंड 15, तो प्रॉफिट इज 5, 20 एंड 25, द प्रॉफिट इज 5। अगर मैं कोई नंबर ऐसा कर दूंगा लाइक 25 एंड 10, then also it will run, because it will run for a specific amount of time rather than checking the condition. And then 10 and 12, then 17 and 19. So it is like it will run 5 times, and after 5 times, like 1 2 3, okay, 15 and 25, and the program will terminate, because मैंने सी इन सी आउट बाद में डाला, तो इसने सी इन सी आउट पूछा, बट इसने कुछ दोबारा से ऊपर ये गया नहीं। सो इट विल जस्ट रिपीट फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। जितने टाइम्स हमने इसको बता रखा है, ये उतने ही टाइम चलेगा। Okay, so is the for loop clear, or you need me to explain something about the for loop? Okay, everyone else? आई थिंक दिस इज गुड, है ना। ऐसे ही अपन लोग ना सारे कॉन्सेप्ट उठाते चलते हैं एट लास्ट। जैसे भी आज फन एक्टिविटी होने वाली है ना। फन एक्टिविटी कुछ नहीं है वो गाइस, उसमें कुछ क्वेश्चन देंगे, ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, वहाँ करेंगे। तो सारे क्वेश्चंस एंड जो भी मतलब हम टॉपिक उठाना चाह रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस उठाना चाह रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन जो पूछे भी जाते हैं इंटरव्यू में, वो हम वहाँ पे प्लेस कर देंगे आपके लिए, ठीक है, जिससे आप वो सॉल्व कर सको। तो इन दिस फन एक्टिविटी वी विल डू लाइक दिस ओनली। तो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझते चलो, एंड डोंट लीव एनी कॉन्सेप्ट कि आता है हो जाएगा, ठीक है। पर्सनली बता रहा हूँ, और आपकी मर्जी हो तो यू कैन स्किप एनी कॉन्सेप्ट, है ना। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आई क्या, थिंक अब एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, लाइक कि अब समझ में भी आ जाएगा कि हमको कौन सा लूप किस तरह से यूज करना है व्हेन वी आर लाइक लुकिंग एट सम ऑफ द क्वेश्चंस। तुझे एक बार तो लास्ट लूप दिखा दे फॉर ईच, देन विल no, for each is not like associated here. For each will be shown when it comes with array, ओके ओके because it is mainly associated with array. नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हाँ वो सही है।
सो अभी हम एक वो करते हैं, लाइक कुछ क्वेश्चंस पूरे करते हैं। एक कमेंट डाल देता हूँ मैं शुरू में ही। हमको क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है विच विल टेक एन integer as input and will print its multiplication table। ठीक है, अब ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, हमको एक मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करवानी है एक उसकी। तो अब देखते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करवाना कैसे, क्या कुछ होगा, क्या कुछ करेंगे। तो अब जब जब भी हमारी मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट होती है, तो वो प्रिंट होती है फ्रॉम 1 to 10। तो अब हमको क्या करना है, आइटरेट करना है ओवर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। हमको 10 टाइम्स ही चलाना है, तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम चलाना है। सो वी विल बी यूजिंग द फोर लूप्स। Yeah, we can use the loops interchangeably, but I am defining it how the programmers thought about it, and why they designed different loops. Like एक ही लूप भी हो सकता था, while लूप भी हो सकता था, उसी से हम सारा काम अचीव कर सकते थे। एक for लूप भी हो सकता था जिससे हम सारा का सारा काम अचीव कर सकते थे। बट देर आर डिफरेंट लूप्स दैट आर प्रेजेंट, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा ना। सो दैट इज व्हाई we are studying different type of loops that are present over here। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, हमको एक टेबल प्रिंट करवानी है, तो वी नीड टू रन इट 10 टाइम्स। इंक्लूड stream using namespace std int main। एंड int main के बाद हम क्या करेंगे, हमने एक int नंबर एंटर करवाया, int num, एंड हमने ले लिया सी इन num। ठीक है, अब हमने एक नंबर इनपुट ले लिया है। अब इसकी हमको क्या करना है, टेबल प्रिंट करनी है फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करनी है। आई इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड देन वी हैव टू लाइक इंक्रीमेंट इट बाय 1, क्योंकि 1 के बाद 2 की प्रिंट करनी है, 2 के बाद 3 प्रिंट करना है। सो वी विल प्रिंट जस्ट सी आउट आई नो एन num multiplied with I is equal to multiply I, and we will just end the statement here। तो अभी इसको रन करके देखते हैं, और इसके अंदर एक छोटा सा वो एक क्वेश्चन आएगा सबके लिए। लाइक मैंने इसको रन किया, मैंने डाला इसको, इनपुट डाला एक 5, इसने 5 की टेबल प्रिंट कर दी, 5 10 15 20 25 30 40। बट एक मैंने नंबर डाला भी 54,721। ये भी चलो एक थोड़ा और बड़ा नंबर डालते हैं। तो इसके अंदर आउटपुट गलत आ रहा है हमारा, लाइक व्हाई इज दिस शोइंग मी रॉन्ग आउटपुट। आई थिंक ये कल भी मैंने बताया था। सर लिमिट ऑफ इंट। ओके ओके ओके, वी कैन यूज डबल और लॉन्ग लॉन्ग इंट। हाँ, वी विल यूज लॉन्ग लॉन्ग इंट, एंड लॉन्ग लॉन्ग इंट से हमारा ये पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। वी विल यूज लॉन्ग लॉन्ग इंट एंड सो इट विल जस्ट सॉल्व इट, क्योंकि हमारी लिमिट ही नहीं है इतनी जितना हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। So it is now showing the correct output। Okay, so this is something that needs to be taken into the consideration depending on the input
अगर मेरा इनपुट ही ऐसे, अगर मेरे को कहीं पे प्रोग्राम करने को बोला और उन्होंने बोला है कि मेरे को 1 से 100 का ही चेक करना है फॉर लाइक, कभी भी हम कोई प्रोग्रामिंग वेबसाइट पे जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, सो देर आर define just the limits of the input, so we can like take our data types accordingly. तो अब एक चीज करते हैं, एक क्वेश्चन अब ब्रेकआउट ग्रुप्स बना देते हैं ऑफ लाइक फंक्शंस वाला जो टॉपिक होता है, एक फंक्शन और टॉपिक के बाद हम ग्रुप बना देते हैं। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ना हमारे एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, और फंक्शन कुछ नहीं करता, बस जो हमारे प्रोग्राम को थोड़ा क्लियर कर देता है यूजर को कि उसको ये चीज कैसे करनी है, और ये एक स्पेसिफिक पार्ट क्या कर रहा है। अभी जैसे मैंने एक फंक्शन बना दिया void, एक रिटर्न टाइप होता है फंक्शन का। एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ओवर द व्हाइट बोर्ड। अब थोड़ा एक बार फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट ऑफ विद द क्वेश्चंस। Like there is a topic of function, so function is nothing else is just a group of code that does a specific job। ठीक है, अब मेरे को जो भी एक जॉब करता है मैं उसके लिए वो करवा देता हूँ। ठीक है, अब इसके लिए मैंने फंक्शन बना दिया। अब फंक्शन में क्या होता है, हर एक फंक्शन चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, एवरी फंक्शन हैज लाइक समथिंग। फर्स्ट इज लाइक द रिटर्न टाइप associated with it। रिटर्न टाइप वो होता है कि वो चीजें क्या रिटर्न कर रहा है। देन देर इज अ फंक्शन नेम, then there are some of the like bracket start and parameter। What are parameters? Parameters can be considered as input to a function, like जो भी एक फंक्शन को इनपुट आएगा वो एक हमारे पैरामीटर होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर कोई ना कोई स्टेटमेंट्स आती है। तो अब इस चीज को देखते हैं, जैसे हमारा ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, हमारे को यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करवाना है, हमको मल्टीप्लाई का एक फंक्शन बनाना है, तो कुछ भी नहीं करता तो मतलब हम बोल देते हैं void। अब void का फंक्शन का नेम मैं बना देता हूँ मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो अब जैसे ही मैंने मल्टीप्लिकेशन टेबल नाम डाला तो मेरे को ये चीज क्लियर हो गई। अब मेरे को किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करने के लिए वो नंबर चाहिए, सो आई विल जस्ट राइट इंट नम। और मैं ये सारा का सारा चीज जो मैंने इसके अंदर की हुई थी, मैं ये सारा का सारा काम फंक्शन के अंदर कर दूंगा। तो अब इससे क्या फायदा होगा, लाइक हाउ विल लाइक, अब क्या ये चल जाएगा? मैंने बना तो दिया फंक्शन, बट मैं इसको रन करता हूँ, इसने मेरे से एक नंबर एंटर करा 5, इसने टेबल ही प्रिंट नहीं की, क्योंकि मैंने फंक्शन तो डिफाइन कर दिया बट मैंने बताया नहीं कि इस फंक्शन के साथ करना क्या है। सो आई ऑल्सो नीड टू कॉल द फंक्शन। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल फंक्शन को कॉल करूंगा, और जो मेरे को इसका इनपुट देना था, मैंने यहाँ से एक नंबर इनपुट लिया नम, एंड आई एम गिविंग इट दिस नंबर एज इनपुट। आई एम गिविंग द नंबर एज इनपुट, then it will just run it। so what it will do when I write 5, so it will print the table of 5। और इसके अंदर क्या है, फंक्शन लिखने के बाद हमको ना बार बार इसको डिफाइन नहीं करना पड़ता, मतलब कि मेरे को ये स्टेटमेंट्स बार बार नहीं लिखनी पड़ेंगी जब भी मेरे को मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करनी है। आई विल जस्ट कॉल इट अगेन, लाइक आई want to print the table for another number as well, so I will take input as number and then I will call it again। तो मेरे को ये बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, I need to write it only once। 5 का भी कर दिया और 10 का भी कर दिया, बट मैंने कोड तो एक ही बार लिखा है इसका। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ फंक्शन दैट वी कैन राइट इट ओनली वंस, एंड देन दिस इज वी कैन ऑब्टेन वेरियस थिंग अबाउट इट। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं आज के लिए, जिससे फंक्शंस का भी हमारा टॉपिक और लूप्स का भी टॉपिक, दोनों के दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। लाइक हमको ना एक मल्टीप्लिकेशन टेबल तो हमने कर ली, हम अब बोलेंगे यूजर को
कि वो एक नंबर एंटर करे, एन। एन एक नंबर होगा, यूजर विल एंटर इट। ठीक है, आफ्टर एंटरिंग द नंबर हमको क्या करना है, वन से लेके वन टू एन जितने भी नंबर्स हैं उनका सम करना है, एंड देन प्रिंट सम ऑन स्क्रीन। Yeah, we have to like write sum of natural numbers, and like I am breaking out you into the group of four people, so you can just discuss among yourself. You can have it. And guys, don't take it seriously. From this activity, you can develop your logical skills to understand a problem with different scenarios. Four people have different four scenario. Okay, you have four scenario to solve a particular problem. So take the advantage and see which group can do this. So the breakout groups will end after 5 minutes. So you will all be divided into group of four for 5 minutes. So and you all can unmute yourself and ask, discuss it over the call. So it will be a great thing if you all can like discuss it interactively.
हाय एवरीवन, कैसा एक्सपीरियंस रहा? आई थिंक जैसा भी एक्सपीरियंस रहा होगा ना गाइस, इट्स द सेम एक्सपीरियंस व्हेन यू आर इन द इंटरव्यू और बैठते हो वहां पे जाके, इंटरव्यूअर आस्क द क्वेश्चंस, इसी स्पीड में पूछता है, इसी स्पीड पे अपन को लॉजिक बिल्ड करना होता है, इसी स्पीड पे आंसर करना होता है. हाउ वाज एक्सपीरियंस गाइस? यस और नो? Sir, good. एनीवन? This was good सॉल्यूशन experience. सॉल्यूशन मिला? Those who were able to like solve the question, can they write like they are able to solve, or like there was something that was they were not able to solve? It's, They're able to solve. you can okay, you can just If write it we down. built And out the logic, okay, okay. nothing happened. If you have built a logic, then it is completely fine. Not able to code it, that is completely okay. But the main thing that is behind DSA is the concept of building the logic. I was able to source but not discuss. Okay, no problem, guys. जो लॉजिक बिल्ड करा है ना, जस्ट ओनली स्निपेट उसका कोड कोड करके चैट पे भेज दो. जस्ट ओनली नहीं, यस. चैट पे भेजने की जरूरत नहीं. लाइक आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट ओवर here because some of the I got to know about some of the problem who were facing some of the issues regarding it. ओके तो ओके अब इसको देख लेते हैं कि हमको करना क्या है, इसको हम कोड कैसे कर सकते हैं. ठीक है. अब इसको एक बार एक कोड भी करके देख लेते हैं इसका. अभी ये किसी ने मेरे से पूछा भी था कि ये सिर्फ मेन डॉट सीपीपी के लिए चलेगा क्या. तो एक और फाइल के लिए भी टेस्ट कर लेते हैं. लाइक कि एक और तरीका होता है जिससे हम चला सकते हैं. ये बाय डिफॉल्ट मेन को लेता होगा. लेट अस चेक इफ इट इज पॉसिबल टू रन इट डिफरेंटली. ठीक है. तो हमने एक फाइल बनाई लूप डॉट सीपीपी. तो अब हमने क्या किया, हैशटैग ये इंक्लूड. आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है, एक बार स्क्रीन शेयर ओके ओके, लेट मी शेयर इट. Okay, is it now visible to everyone? यस. ओके. तो हमने किया हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, जो हम पहले ही करते थे. str using namespace std in. Sarthak, in the meanwhile, can you do one thing? Can you combine both of the groups that are different, so that all of the people can just talk interactively over the WhatsApp? Can you share the joining link of one group and the another? ओके श्योर. ओके. सो लाइक अब हमको क्या करना था, हमको सम करना था फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का, जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी. ठीक है. तो हम क्या लिख देंगे, अब हमारा क्या होगा, रिटर्न हम क्या करेंगे, सम रिटर्न करेंगे. ठीक है. तो हमने क्या किया, इंट रिटर्न कर दिया, लाइक सम ऑफ नेचुरल. अब मेरे को सम ऑफ नेचुरल नंबर लेना है, और मेरे को यूजर ने क्या इनपुट दिया था, मेरे को एक नंबर दिया था एन, और मेरे को एन 1 से लेके एन तक का सम करना था. तो मैंने क्या कर दिया, इंट नम मेरे पास एक आएगा, और अब मेरे को क्या रिटर्न करना है, अब मेरे को एक और वेरिएबल चाहिए सम. ठीक है. अब मैंने क्या किया, इंट सम. अब मैंने सम बना दिया, और सम मेरा क्या होगा, शुरू में मेरा सम क्या होगा, कोई भी नंबर मैंने ऐड नहीं किया है, तो सम 0 होगा. तो कुछ भी नहीं है तो 0 होगा. अब इसके अंदर हमने क्या किया, हमने एक लूप चलाया. फॉर लूप से भी कर सकते हो, वाइल लूप से भी कर सकते हो. आई एम मोर कंफर्टेबल विद फॉर लूप, सो आई एम डूइंग इट विद फॉर लूप. अब फॉर लूप में हमने क्या चलाया, हमने एक वेरिएबल ले लिया इंट n इज इक्वल टू 1. ये हमको 1 से लेके n तक का सम करना था. अब 1 से लेके मेरे को कहाँ तक का सम करना है, n इज लेस देन इक्वल टू सम. और मैं क्या करूँगा, n को प्लस प्लस कर दूंगा, ताकि मेरा एक नंबर आया, फिर मैं उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे चला जाऊँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे चला जाऊँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे. तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल राइट सम इज इक्वल टू, अब सम क्या था, लाइक प्रीवियस सम प्लस मेरा नंबर जो आया है, और इसके बाद मैं क्या कर दूंगा, सम को रिटर्न कर दूंगा. रिटर्न सम. व्हाट इट विल डू, अब मेरा क्या होता है, अब मैंने यूजर ने एक इनपुट लिया इंट एन, सी इन करवा लिया एन को, और
हमने इसको क्या करवा दिया, अब मेरा ये रिटर्न कर रहा है इंटीजर, ये मेरा एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है और इस इंटीजर को मेरे को प्रिंट करना है अपनी स्क्रीन पे। तो मैं क्या करूंगा, सी आउट सम फ्रॉम 1 to n इज, और मैं उस सम को प्रिंट करवा दूंगा। तो मेरा सम क्या आएगा, सम ऑफ नेचुरल, और वो नेचुरल नंबर n तक होंगे। मैं इसको प्रिंट करवा दूंगा ऑन द स्क्रीन, एंड लेट मी जस्ट राइट एन एंडल स्टेटमेंट एज वेल। Was someone Sorry, sorry. speaking? Why is it coming? Okay, I have not like used it. Okay. अब मैं इसको अब किसी ने पूछा था कि अगर कोई और फाइल होगी तो उसको रन कैसे करवाएंगे। अगर मैं इसको रन करता हूँ ना, तो ये मेरे को एरर दे देगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली मेन डॉट सीपीपी फाइल को उठाता है और मेन डॉट सीपीपी फाइल के अंदर ये उसको नहीं देख पाता है। बट व्हाट आई वांट कि अब मेरे को इसको एक दूसरी फाइल को रन करना है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू शेल, यहाँ पे कंसोल है, यहाँ पे शेल है। अब शेल के अंदर मेरा एक कमांड होता है जी प्लस प्लस, लेट अस सी इफ द कमांड ठीक है, जी प्लस प्लस मेरा कमांड है, एंड आई विल टाइप द नेम ऑफ द फाइल लूप डॉट सीपीपी विच इज द नेम ऑफ माई फाइल। मैं एंटर करूंगा। सो व्हाट इट विल डू, इट विल जस्ट कंपाइल द कोड, लेट अस वेट फॉर इट टू कंपाइल इट। This is the basic syntax that we are practicing in Linux systems as well. तो एक मेरी फाइल बन गई a डॉट आउट, और जो ये a डॉट आउट फाइल है ना, ये मेरा इंटरमीडिएट कोड है। और ये देखो, ये एक नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, जो हमने ऑब्जेक्ट कोड या इंटरमीडिएट कोड की बात की थी। तो दिस इज द इंटरमीडिएट कोड विच वाज जनरेटेड जब हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। ये 0 1 की फॉर्म में भी नहीं है। इज इट इन द फॉर्म 0 1? सो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 0 1। Is it human readable? It is not human readable. So this is something जो हमने कल बात भी की थी कि एक वो इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है हमारा कंपाइलर। अब इस कोड को एग्जीक्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे, ./a.out एंटर करेंगे और मेरा प्रोग्राम चल जाएगा। अब मेरे प्रोग्राम में मैंने क्या किया था, उसके अकॉर्डिंग मैं इनपुट देता हूँ। मेरे को एक नंबर इनपुट देना था n, मैंने दे दिया 5, or sum from 1 to 5 is 15, and you can just verify it. 5 plus 4 is 9, and 4 plus 3 is 12, and then 12 plus 2 is 14, and plus 1 is 15. Okay, so this is the concept that was behind the topic कि हमारे sum of natural number क्या थे और किस तरह से हमने इसको कोड किया using the help of loops. So is the question clear to everyone कि किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, how we are going to solve it, and what is the the motive behind using loops and the motive behind using functions. Okay, okay. So जैसा कि मैंने कल बोला था कि कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम आपको शेयर करेंगे. So I am just writing the questions over the whiteboard. You guys just can take a screenshot, and Sarthak, what you can do, you can just take a screenshot and share it over the group so that they can just practice these questions. Okay. Which Okay, question? so I am just writing it down on the whiteboard, and after writing it down, so Okay, they, no, don't write over here. Write over the WhatsApp only. Okay. I will also share over the WhatsApp group then. Meanwhile, they can practice it if you are free for 5 to 10 minutes, and if they are facing any of the doubts, they can ask it over here. That's why I was writing it over here as well. So सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन होगा, check from 2 numbers which is greater, either num 1 और num 2. तो अब हमको चेक करना है, दो नंबर हमको गिवन होंगे या हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं.
and we have to check it which of the number is greater. I think this is a simple question, and we have also practiced it yesterday, so I think all of you will be able to do it. ठीक है, अब एक सेकंड क्वेश्चन की भी बात करते हैं, आगे और भी देख सकते हैं क्वेश्चन. Check if a number size between 10 and 90. This is also a like simple question. Then good question. Find the greater of the three numbers. लास्ट टाइम हमको क्या 2 नंबर्स गिवन थे, अब हमको 3 नंबर्स गिवन है. तो हमको 3 नंबर में से बताना है कौन सा बड़ा है, लाइक num1 slash num2 slash num3. So we have like 3 numbers this time and we have to compare 3 numbers. The grade 1 question that you have already solved, so that is also a good question. And let me look for other questions as well. Check if a year is a leap year or not. And this question is also one of the favorite questions for the interviewer, the one question. Okay, I will just give the questions like for the topics that we have covered. And the number, I am not sure about the number. It can be less than 10, it can be 10, or it can be more than 10 as well, depending on the topics that we have covered and the question I remember. So this is also asked by the interviewers most of the time. So you need to like pay a little more attention to it. Like what is the logic behind it? What is the actual logic behind a leap year? Like most of us are not familiar about the logic behind the leap year, actual logic behind the leap year. And then printing the factorial of a number. So this is the question mainly associated with the loop, because we need to print the factorial, we need to do a task recursively. And sixth question, print the factor of a given number. So factorials and factors are different. Like for 5, the factorial is 120, and for like 10, the factors are like जिससे वो divisible होता है. Like कि अगर मैं 10 को लेता हूँ, एक नंबर मैं कंसिडर करता हूँ which is 10. तो अब 10 किस किस से डिविजिबल है? 10 is divisible by 1, 2, 5 and 10. So these are the factors. So this is something that is related with the factors, and factorial is like the multiplication. I think you must be aware about what is factorial and what are factors. Yeah. You are completely right. You have written it correctly in the chat section. ठीक है, अब ये 6 क्वेश्चन हो गए. लेट मी ऐड a few questions to it. And 7th question is, check if a number is a perfect number. 8th question, check if a number is an Armstrong number. So like these are some of the topic that you can Google.
like of the factors except the number is equal to the number, and Armstrong number power of the digit to the of power of digits to the number of digits is equal to the number. So this is the Armstrong number. I have just also added the definitions for the perfect number and Armstrong number. If number is prime or not, and the question is print the sum of digits of a number. इसके अंदर हमको क्या करना होगा, लाइक सम ऑफ डिजिट्स करना होगा. अब ये सम ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या होता है, लाइक सपोज वी हैव ए नंबर विच इज 1 1 2 5 4. सो इसके अंदर सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, 1 + 1 + 2 + 5 + 4. तो ये करके हमको अब प्रिंट करना होगा. सो दिस इज लाइक व्हाट आई मीन विद सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर. Just clearing it down. I think this is more than sufficient. No, there are like 2 more questions that they can practice. Then it will be more than sufficient. We are just as we mentioned that there will be ample number of questions, and you will be able to like crack anything after you practice the questions. So this is something. Exactly. Can we use any loop for approaching the problem? Yes, Yeah, you can you can use any of the concepts that have been taught till now, because all the questions are from the concepts that have been taught till now. Nothing extra is required for like solving these questions. So you can use any concept, guys. Yeah. Check if a number is a palindrome. Palindrome मतलब क्या होता है, like 121. yeah, like that reverse number. Reverse and the same thing is same. Yeah. Reverse is equal to the number. So, 777. yeah, and the last question, like calculate the LCM and HCF for 2 given numbers. And guys, इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो अभी पूछे भी गए इंटरव्यू में. मतलब आई थिंक नॉर्मल सा एक टेस्ट हुआ था हमारे कॉलेज से, तो दे आस्क दीस क्वेश्चंस. बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं. अगर फॉर और वाइल में से पूछते हो तो अब इसके अंदर से like someone was saying something. Yes, sir. Sir, in the first question, check from 2 numbers which is greater, either num1 or num2. Sir, ये तो Yeah. बहुत basic सा चीज है ना sir. I mean, like we are starting from basic and we are proceeding towards advanced. So there are like ample number of questions that are like good amount that are good, and there are some of the questions that are basic. So you need to start from the basic and you need to proceed towards the excellence. okay, thank you, sir. I thought that is something else that which I did not understand. No. अपन अब इसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस होंगे like which we will discuss tomorrow, and the rest of the question you all need to discuss it among yourself and like solve it.
if there is any further help required, we will just share the solution over the WhatsApp group. But it will be great if you all like collaborate with each other and help each other out. So tomorrow we will be discussing like the fourth question, check if ear is sleep or not. Like I will just mark the questions. Like we will be discussing fourth question tomorrow, check if a ear is sleep or not. If we will check if a number is Armstrong or not. एंड लाइक आई एम शेयरिंग द क्वेश्चन जिसके अंदर हमको कुछ ना कुछ एक बेटर अप्रोच बतानी होगी, which is check if a number is prime or not and calculate the LCM and HCM. So these four questions will be discussed like tomorrow in the session, and then we will proceed further with other topics as well. तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आप लाइक कर लो, और अगर कोई डाउट भी आता है, सो दैट इज व्हाई लाइक द सार्थक हैज शेयर्ड लिंक ओवर अ सिंगल फॉर अ सिंगल ग्रुप, ताकि वो सारे के सारे एक ही ग्रुप में हो जाओ, और किसी को भी कोई डाउट है सो यू कैन आस्क इजीली. नॉट नाउ ज्योति, अभी नहीं करने कोड अपलोड, ठीक है. व्हेन अभी सैटरडे आ रहा है, संडे आ रहा है, आई विल टेक अप वर्कशॉप, स्मॉल वर्कशॉप और गेट, ठीक है. देन आफ्टर दैट व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डीएसए पार्ट ना, ठीक है, उस समय यू कैन सबमिट ऑल द कोड्स ओवर, है ना. You don't need to upload any code, just do it on your system, ठीक है. Like can you also take the screenshot of the and can you upload it over the WhatsApp group? I can't take this screenshot. Let me check if I can. Okay, if any one of you can take the screenshot and upload and share it over the group, it will be great, so that everyone will be like up to date with the questions. I think someone has shared the questions over the group. So Okay. it is great, like Komal has already shared it. And if someone missed the question, you guys can ask each other for the questions. So it will be great if like rather than like just interacting with us, you guys interact with each other. So Just it will drop be your great. query. Just drop your query. If we are, we will also, we are there to help you out at each and every point of time. Okay. If till tomorrow, if, is there any question which you are not able to do, we will do it on this session. Till then, do try these questions, guys, and do try to complete these questions in single day only. It will not take. It will take hardly or 1 hour or more, not more than 2 hours. Okay, तो एक दिन के अंदर कंप्लीट करने का ट्राई करो, क्योंकि Okay, Lakshit, like what we can do, you have also a great point. We can just create a Google Doc, and we can share the Google Doc over the WhatsApp group, and I will share the link of the Google Doc, and we will put it in the description of the chat, and further questions will also be like updated in the Google Doc, so that every one of you is completely updated. So like that we can do. हाँ ग्रेट है. तो अभी किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है. एंड गाइस टुमारो आई थिंक एट 4:30 आई विल शेयर अ लिंक, नहीं 3:30 सॉरी, 4 o'clock में वी हैव अ एजार एमएल सेशन रीलिंग, ठीक है, रीलर्निंग ऑफ एजार एमएल, ठीक है. if anyone want to join, they can join. It will be great if you can join this session, है ना. It will be a great meetup, guys, by the way. And if you have any query, you can ask, and otherwise we can stop the session over here only. Any query till here? Can I get one example of an Armstrong number? Armstrong number का example you can just like Google it, or I will just tell it tomorrow, because Armstrong number was something that we will be discussing tomorrow as well. Anything we can prepare for tomorrow's session? Is it like Muskan? Can you unmute and say it, because I am not sure you are talking about the Azure workshop or about the workshop over here. Like for DSA session, I think you need not to prepare anything. Everything will be taught. But for like what you can prepare is you can just code the questions down. So it will And be guys, much easier for you to understand. this can be the example of Armstrong number. Geeks for Geeks plus a basic example. This is how we solve an Armstrong number. ठीक है, कोई भी नंबर लेते हैं, ठीक है,
according to their power we multiply it and then add it. अगर वो number equal होता है उस particular number के, that number is an Armstrong number. ठीक है? Okay. So I think Kshitish, you can close the recording. And stop the recording, guys. ठीक है? Edit